वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु हमें और आपको एक मुख्तसर जिंदगी देकर दुनिया में भेजा है। जो भी दुनिया में आए हैं, थोड़े दिन के बाद, एक मुद्दत के बाद दुनिया से उनको गुजरना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Bapak saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan untuk saya, kita semua, bahkan yang akan lahir setelah kita ini semua, kehidupan kita di dunia ini telah diputuskan oleh Allah hanya untuk waktu yang sangat sementara sekali, singkat sekali. Kita datang ke dunia bukan untuk tinggal, tapi kita datang semua untuk pergi. Yang sudah datang sekarang, yang sudah hadir sekarang di dunia, satu saat suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, wajib untuk meninggalkan dunia ini. आप हजरात देख लीजिए, इस दुनिया में एक ज़माना था, उस वक्त हमारे जो बाप थे, हमारे जो दादा थे, इन लोग गुजारते थे, घर करते थे, बिजनेस करते थे, चलते फिरते थे, मगर उन हजरात दुनिया से गुजर चुके हैं। एक दिन सामने आने वाले हैं जब हमको भी इस दुनिया से रुखसत होने पड़ेगा। Di depan kita semua sudah terbukti, nyata, nampak jelas. Sebelum kita ini dulu ada kakek nenek kita, ada ibu bapak kita, mungkin juga saudara-saudari kita atau kawan-kawan sahabat kita. Mereka juga dulu pernah berjalan hilir mudik di muka bumi ini, pernah melalui kegiatan yang sama seperti kita sekarang. Artinya sama-sama hidup seperti ini. Dan sekarang ini kebanyakan mereka, baik orang tua kita, saudara kita, siapapun yang pernah kita lihat di dunia ini, sudah tidak nampak lagi dalam pandangan kita. Kemana mereka? Mereka sudah sampai di kampung yang sebenarnya, di negeri akhirat. Saya, bapak semua manusia yang sudah ada sekarang dunia dan akan ada di dunia, satu saat nanti juga akan pergi meninggalkan dunia ini. दुनिया से रुखसत होने के बाद हमको जहां जाना है, जो जिंदगी शुरू होने वाले हैं, वो है आखिरत की जिंदगी। जो आखिरत की जिंदगी के बारे में हर नबी आकर ये बात बताया, जो जिंदगी शुरू होने वाले हैं वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा बाकी रहने वाले हैं। Kehidupan yang akan kita tuju sekarang semua ini, Bapak Saudara sekalian, yang mana setelah roh keluar dari tubuh jasad kita ini semua, dan itulah permulaan kehidupan yang sebenarnya, yang sering kita dengar, nama kehidupan tersebut, nama tempat yang akan kita tuju tersebut adalah negeri akhirat ataupun kampung akhirat. Yang selalu kita mendengar tentang akhirat ini, semua yang bersifat akhirat adalah kekal selama-lamanya. आखिरत के जिंदगी में कामयाबी और आखिरत के जिंदगी में कामयाबी होने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, उसके लिए जिंदगी बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के जिंदगी में हम लोग को भेजा। एक हदीस में आए हैं, जिसको महफूम है, उलामा हजरत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा के पूरा कायनात तैयार किया इंसान की खिदमत के लिए, और इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया आखिरत के लिए।
Jemaah sekalian, untuk mendapatkan kesenangan kita nanti setelah kehidupan di dunia ini, atau nanti untuk mendapatkan kemudahan hidup setelah kehidupan di sini, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, memberikan kepada kita semua berupa perintah, berupa satu undang-undang kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan dalam salah satu mafhum hadis, seluruh dunia ini, fasilitas dunia yang kita lihat, yang tidak kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan hak milik kita semuanya, berkhidmat kepada kita. Namun kita semua ini Allah telah tentukan, kita telah diputuskan untuk membangun kehidupan kampung akhirat kita. तो आखिरत की जिंदगी में कामयाबी होने के लिए दुनिया में क्या तैयारी करना पड़ेगा? दुनिया में आखिरत की तैयारी करने के लिए जो जिंदगी इख्तियार करना है वो है अल्लाह की हुक्म और आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर ऊपर जिंदगी गुजारना. Lalu apa yang kita sama-sama sekarang mau usahakan, dan apa itu perintah Allah, undang-undang yang Allah berikan kepada kita semua supaya kita bisa mempersiapkan untuk keselesaan, kemuliaan nanti kita di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala secara merata memberikan kepada kita satu perintah, satu undang-undang yang sama, yang mana bila kita melakukan ini, mengusahakan ini, kita layak semuanya akan diberikan kemuliaan oleh Allah nanti di kehidupan di akhirat. अल्लाह ताला इंसान को पैदा फरमाकर ये बनाने वाला अल्लाह ताला कभी ये नहीं चाहते ये इंसान नाकामयाब हो जाए. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik pencipta manusia yang dia ciptakan dengan kudratnya, tangannya sendiri. Allah tidak mau menciptakan manusia ini untuk dianiaya, untuk dizalimi, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk dimuliakan. दुनिया में देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी चीज को बनाया, किसी चीज के तैयार किया, दुनिया की कोई चीज है, तो ये चाहते हैं ये कामयाब हो जाए, ये सही इस्तेमाल हो जाए, ये नफा देने वाला बन जाए. इसी तरह अल्लाह ने बंदा को, हमें और आपको बहुत मोहब्बत करके बनाया, बहुत मोहब्बत करके पैदा फरमाया. एक मुख्तसर से वाकया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना में बहुत कैदी आया, तो उसमें एक औरत थे, बहुत बड़ा हुजूम था. वो कैदी है कि आए हैं, तो उन्होंने कोई चीज के फिक्र में है, कोई चीज ढूंढ रहा था. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जो वो औरत उसको बच्चा के ढूंढ रहे हैं. जब उसको बच्चा को मिल गया तो औरत ने वो बच्चा को बहुत प्यार करने लगा, मोहब्बत करने लगा. इस चीज देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में बहुत मुतासिर हुए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कह रहे हैं, हे उमर, देखो ये औरत जैसे इसके बच्चे को मोहब्बत करते हैं, इससे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसका बंदा को मोहब्बत करते हैं. Sebagaimana ahli dunia juga menciptakan benda-benda dunia, apapun jenisnya. Dan setelah diciptakan benda-benda itu, bagaimana benda-benda ini nanti bisa dipakai, digunakan oleh khalayak ramai, dan bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyak manfaat. Tidak ada orang yang menciptakan sesuatu lalu untuk dipecahkan, dihancurkan, tidak. Bahkan apapun jenis benda di dunia ciptakan oleh dunia, bagaimana diri dia sendiri dan orang sebanyak-banyaknya bisa menggunakan benda ciptaan itu dengan sebaik-baik mungkin, memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya. Diceritakan
dalam kisah satu hari setelah dalam satu peperangan banyak tawanan-tawanan perang dibawa oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Di antara sekian banyak kaidi ataupun tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang terlihat sangat kebingungan, dalam kesedihan. Dia lihat Rasulullah SAW, dia mondar-mandir ke sana dan ke sini. Kemudian ternyata wanita itu sedang mencari seorang anak ataupun anak kesayangannya. Orang banyak mencari barang-barangnya, mencari ini dan itu, tapi wanita ini ke sana ke sini mencari anak yang dia sayang. Kemudian setelah dilihat ataupun telah didapati oleh wanita sebagai tawanan tersebut anak dia sendiri, maka dia peluk, dia sayang, dia menangis. Maka terlihat di wajah wanita tersebut walaupun air mata membasahi pipinya, akan tetapi kebahagiaan nampak dari wajahnya. Betapa sayangnya dia kepada anaknya, dipeluk. Tidak ada bahasa yang bisa menerjemahkan bahagianya hati si ibu itu. Sayang dia kepada anaknya. Setelah itu Nabi SAW, di dekat dia ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berbisik kepada Umar, "Wahai Umar, lihatlah betapa sayangnya ini ibu kepada anaknya. Orang mencari ini itu, mencari ini dan itu, tapi ini ibu mencari anaknya. Dan setelah dia dapatkan anaknya, betapa ini ibu sayang kepada anaknya. Dia menangis, dia tersenyum kepada ini anak." Kata Nabi SAW, Allah adalah pencipta seluruh manusia, adalah pemelihara seluruh manusia yang mempunyai semua bentuk kecintaan. Demi Allah, Allah mencintai hamba-hamba yang ciptakannya jauh lebih sayang daripada ibu ini kepada anak yang sedang didapati ini. तो आप सोच लीजिए, इतनी मोहब्बत करके अल्लाह ताला ने इस बंदा को पैदा फरमाया। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा कामयाब हो जाए, मगर बंदा सोचते हैं कि हमारे कामयाबी माल में है, हमारे कामयाबी मुल्क में है, हमारे कामयाबी दुनिया की असबाब में है। बस अल्लाह जो बनाने वाले हैं, जो इंसान को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला इंसान को कामयाबी के लिए माल और मुल्क को शर्त नहीं लगाया। इंसान का कामयाबी है अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Jemaah sekalian, coba kita lihat sedikit, kita pikir sedikit. Begitu cintanya Allah kepada hamba-hamba ini, begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia. Tidak akan mungkin Allah mau menganiaya kita setelah diciptakan. Akan tetapi sejak manusia diciptakan, Allah menginginkan manusia setiap diri pribadi manusia. Mereka ini dunia dan akhirat selamat mulia. Akan tetapi pandangan mata manusia dengan pandangan Allah, kasih sayang Allah sedikit berbeda di sini. Manusia ingin mewujudkan, mendapatkan kemuliaan, kesenangannya dunia akhirat. Dia berpikir, kalau Allah memberikan harta benda yang banyak kepada saya, kalau Allah mengaruniakan kepada saya kekuasaan, kerajaan, ataupun benda-benda yang lainnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau akan memberikan kemuliaan, kesenangan kepada setiap manusia yang dia ciptakan, dunianya dan akhiratnya. Tidak memberikan syarat kepada harta yang banyak, kepada kekuasaan kerajaan yang tinggi, atau melalui benda-benda yang lainnya. Namun untuk seluruh manusia diperlakukan oleh Allah syarat untuk mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Allah datangkan hukum-hukum perintahnya. Semua perintah Allah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia yang diciptakan oleh Allah berjalan atas ini, maka mereka
berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia dan akhiratnya. मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये बात को समझाने के लिए और ये चीज इंसान के अंदर में बैठाने के लिए अल्लाह ने एहसान फरमाया, अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी के सिलसिला में भेजा। एक दो नबी नहीं, उलमा हजरत फरमाते हैं ये लाखों की तादाद नबी दुनिया में तशरीफ ले आए और हर नबी ने ये बात बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी ने बात बताया, वो लोगों तुम्हारा कामयाबी अल्लाह की हुक्म पर है। Maka untuk meyakinkan dengan perintah-perintah Allah ini sebagai sumber kemuliaan seluruh manusia dunia dan akhirat, untuk mendudukkan yakin seperti itu di dalam setiap hati-hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal sampai dunia ini akan diakhirkan oleh Allah mengirim para utusan, para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Para ulama kita memberitahu tidak cukup 1, 2, 3, 10, 20, tidak, lako, beratus-ratus ribu. Dalam makna hadis katakan 124.000 nabi dan rasul Allah kirim ke hadapan manusia, memberitahukan, memberikan penjelasan kepada umat manusia supaya mereka yakin dengan kalimat ini, bahwasanya kemuliaan kalian dunia akhirat adalah atas perintah Allah dan ikut ke cara nabi yang hidup di zamannya. Maka para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebagian tersebut nama Al-Quran seperti Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, semua satu kerja, satu tujuan, menyampaikan kepada seluruh umat manusia ciptaan Allah, wahai seluruh manusia, kalian ingin mulia dunia akhirat, tidak sulit-sulit, tidak jauh-jauh mencarinya, laksanakan, kerjakan seluruh perintah Allah, ikuti cara yang dibuat oleh para nabi kalian. आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आकर यही बात बताया। दूसरी चीज जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद और कोई नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी है, इमामुल अंबिया है। दुनिया से जाने के बाद दूसरे कोई नबी दुनिया में नहीं आएंगे। तो नबी वाला जो काम है, जरा सोच लीजिए, जो काम अंबिया सल्लल्लाहु किया चुके हैं, जो काम आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, उनकी दुनिया से रुखसत होने के बाद ये दावत वाला काम अल्लाह ताला ने ये उम्मत पर सुपुर्द फरमाया। और ये उम्मत पर ये दावत वाला काम के जिम्मा लगाया। ये उम्मत को अल्लाह ने बहुत बड़ा इंतखाब, बहुत बड़ा इनाम फरमाया। Jemaah sekalian, silsilah dari kenabian, nabi demi nabi, namun karena dunia ini sementara, Allah tutup pintu kenabian dengan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau nabi terakhir, rasul terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi, dan setelah umat beliau ini tidak ada lagi umat. Nabi sudah berakhir, kehidupan beliau sudah selesai. Sekarang kehidupan umat sedang berjalan. Habis umat ini, habis pula dunia ini. Maka kemuliaan rasul akhir zaman ini bukan sekedar untuk umat di zaman beliau, dan kemuliaan umat akhir zaman ini bukan untuk sekedar umat di zamannya, akan tetapi kemuliaan nabi dan kemuliaan umat berterusan sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, kita semua dengan sebab meninggalnya atau berakhirnya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan satu kemuliaan yang sangat besar, yang maha besar di atas segala yang besar daripada pemberian Allah kepada umat manusia yang pernah ada di dunia ini, yaitu pikir maksud hidup Nabi, kerja kenabian. Saya dan kita semua umat akhir zaman bukanlah Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan putra putri Nabi, tapi Allah beri karunia besar, satu kerja kenabian, yang dengan kerja kenabian ini membuat kita jadi besar di depan Allah Subhanahu wa taala. मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस
उम्मत का हर फर्द, चाहे इंडोनेशिया में रहे, मलेशिया में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, बूढ़ा हो, जवान हो, पढ़े लिखे आदमी हो, अनपढ़ आदमी, हर फर्द उम्मत का जिंदगी मकसद है। ये दावत वाला काम, अंबिया अलैहिस्सलाम काम को लेकर ये जिंदगी का मकसद है। Maka oleh sebab itu setiap diri individu dari umat ini, umat akhir zaman ini, mau yang tinggal di Australia, yang tinggal di Indonesia, ataupun di belahan negeri lain, India, Pakistan, Bangladesh, semua negara yang pernah ada di dunia sekarang ini, setiap individu umat, laki-laki, perempuan, mereka Allah kasih tanggung jawab besar atas ini, mengamalkan agama secara sempurna untuk dirinya, dan membawa agama sempurna ini ke seluruh penjuru dunia dengan pikir Nabi Anbiya alaihi wassalam terdahulu dan pikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja saya dan kita semua. एक है जरूरत और एक है मकसद। मकसद ऊंचा होता, जरूरत उसका नीचे का चीज है। हमारे घर करना, हमारे तिजारत करना, काश्तकारी करना, जरूरत, ये है हमारे जरूरत जिंदगी। बस इस उम्मत का मकसद क्या है? ये उम्मत का मकसद है तमाम दुनिया में हक को जिंदा करने के लिए, कलमे के जिंदा करने के लिए वो जान और माल को लगाएंगे। यह है ये उम्मत का मकसद जिंदगी। Dalam setiap kehidupan kita, setiap individu umat ini ada dua perkara yang sangat penting Allah letakkan dalam hidup mereka. Satu, dururiyatnya, kebutuhan hidup kita masing-masing. Dan ini sering sudah diberitahukan oleh masyayikh kita. Seperti kepentingan makan minum kita, kebutuhan tempat tinggal kita, pakaian kita, perdagangan kita, dan yang lain-lainnya. Dan ini semua adalah kebutuhan hidup kita. Namun di atas yang lebih penting daripada kebutuhan ini adalah maksud kehidupan. Dan maksud kehidupan inilah yang akan menentukan nilai setiap umat ini. Kebutuhan bisa kita korbankan demi untuk mencapai maksud. Tapi maksud jangan sekali-kali, jangankan kita korbankan, kita undurkan jangan sekali-kali demi untuk memenuhi daripada kebutuhan ini. Maka maksud ini bagaimana perkara yang hak, agama Allah yang hak, agama Islam yang sempurna yang tinggal ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa hidup di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita berbentuk kesehatan, ilmu pengetahuan, harta benda, kekayaan kita, harga diri dan perasaan kita yang sudah kita korbankan, dan semua ini akan kita korbankan untuk mencapai maksud ini. Dan itulah tujuan sebenarnya umat akhir zaman ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. उलामा हजरत फरमाते हैं, हदीस पाक में आए हैं, जो वो बंदा बहुत खुशनसीब है, वो बंदा बहुत मेहरबान है जिसका जान और माल दुनिया में खैर फैलाने के लिए, दीन फैलाने के लिए इस्तेमाल होता। Para ulama dan juga dalam mafhum hadis disebutkan bahwasanya sangatlah seorang itu beruntung, atau alangkah beruntungnya seseorang itu apabila diri, harta bendanya, perasaannya, semua yang Allah karuniakan kepada dia digunakan, dipakai oleh Allah untuk memperjuangkan agama Allah SWT sebagai maksud kehidupan. इसलिए हमारे हजरत फरमाते हैं, भाई हर साथी इसके नियत करे, इसका इरादा फरमाए, इंशाअल्लाह हम हमारा जान और माल अल्लाह के रास्ते में के दीन की दुनिया पे फैलाने के, तमाम दुनिया में के हक को जिंदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। Oleh sebab itu, saya sendiri dan kita semua yang hadir, bahkan yang tidak hadir, kita sampaikan ini. Putuskan sekarang niat yang betul-betul. Selagi masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, niatkan betul-betul sekarang, buat keputusan. Harta saya, diri saya, perasaan saya, apapun yang Allah berikan kepada saya, akan saya gunakan 100% untuk
menghidupkan agama Allah secara sempurna di seluruh penjuru dunia. Bersedia semua? कहते हैं कि हम साल में 4 महीना अल्लाह का रास्ते में निकले और बाकी जो 8 महीना है वो घर में ठहर कर मुकामी काम करे और हमारी जरूरत जिंदगी की पूरा करने के लिए कोशिश करे। इसलिए भाई इरादा फरमाए कौन कौन साल में 4 महीने लगाने के लिए तैयार है? Maka हर साल 4 महीना। Maka masyayikh kita, orang tua kita selalu memberikan targhib, kata-kata semangat kepada kita. Tertib hidup kita ini dibagi-bagi seperti sahabat. Dalam setahun minimal kita sediakan 4 bulan berterusan di jalan Allah SWT. Setelah selesai 4 bulan, pulang ke tempat masing-masing, mahala, makomi masing-masing. Kita hidupkan amal yang sama. Kita persiapkan semua orang di mahala, di makomi kita. Dan kita juga datang pulang ke makomi bukan untuk pulang seperti orang merantau. Tapi kita pulang untuk mempersiapkan dengan bekal yang lebih banyak. Tempat yang lebih jauh, masa yang lebih lama lagi. Bersedia semua seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekalian yang belum daftar, silakan daftar namanya untuk dibentuk jemaah di tim taskil di daerahnya masing-masing atau provinsinya masing-masing. Setelah ini tidak ada amal isyad, kita menunggu sampai azan asar. Nanti habis asar akan dilanjutkan kembali. Untuk perkhidmatan yang di bawah tenda, silahkan menunggu di bawah tenda, nanti akan diantar makanannya. Kemudian yang di teras masjid ini, untuk para penanggung jawab daerah kita yang sudah dituakan, atau penanggung jawab yang utusan-utusan dari provinsi daerah kita, mohon dikosongkan karena untuk orang-orang tersebut. Silakan ya sekarang peserta musyawarah sudah disiapkan di bawah tenda. Nanti akan diantar makanannya, kita duduk menunggu makanan.